What has the COVID-19 pandemic taught all of us about financial management? कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही साधारण सी लगती हैं, लेकिन जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इम्पैक्टफुल हैं। और ऑनेस्टली एज अ फाइनेंशियल प्लानर मेरे को लगता है कि मैंने इतने केसेस देख लिए हैं इस लास्ट 1 ईयर में, जहाँ पे छोटी सी लापरवाही की वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस लोग बचा सकते थे। हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो बहुत बार हम लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ मेमोराइज कर लेते हैं। जैसे मैं भी ये गलती करती थी, मैं एक ही पासवर्ड हर जगह दे के एंड आई वुड जस्ट कीप लाइक 2-3 पासवर्ड्स एंड दे वुड बी इजी फॉर मी टू रिमेम्बर कि ये 2-3 पासवर्ड्स हर जगह यूज करने हैं। और कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? बट इफ you do not share your passwords with your family, then इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं। एक बहुत सी सिंपल एक्सरसाइज आज ही कर लें। अपने जितने भी बैंकिंग पासवर्ड्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस से रिलेटेड पासवर्ड्स हैं, उन सब की एक एक्सेल फाइल बना लीजिए। उस एक्सेल फाइल में जब भी आप पासवर्ड चेंज करें उसको अपडेट करते रहिए एंड मे बी यू कैन जस्ट शेयर इट विद योर whoever is your confidant, जिससे भी आपको लगता है कि हाँ ये सेफ रहेंगे इसके पास। मे बी योर स्पाउस, मे बी योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, यू नो दैट वन पर्सन शुड ऑलवेज बी इन द नो। एक जने को तो हमेशा आपको बता के रखने चाहिए कि ये एक मेरी फाइल है, ये यहाँ पे सेव्ड है, इस एक्सेल फाइल में सारे मेरे पासवर्ड्स हैं, राइट? And further, that file can be password protected with like something simpler which that person can memorize or write it down, right? So it's always beneficial for your family to take care of your money after something untoward happens. So don't forget to share your passwords with your families, guys. दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, या इवन आर बैंक लॉकर्स एंड एफडीज एंड व्हाटएवर, जो भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें हम नॉमिनी डालना बहुत बार भूल जाते हैं। ऑल्दो अब नॉमिनेशन काफ़ी चीज़ों में कंपल्सरी कर दी गई है, लेकिन फिर भी बहुत बार हम नॉमिनी को या फिर तो अपडेट करना भूल जाते हैं या फिर लिखना भूल जाते हैं। नॉमिनी क्या चीज़ है? नॉमिनी इज़ अ पर्सन whom you can list in your investment, राइट? जो आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर आपका कोई लॉकर है, उसमें if something happens to you, then that person can claim that money. So that person is the nominee. And again, anybody in your family can be a family, or anybody who is dear to you can be your nominee. For example, any parent or spouse or a sibling, right? So, or your children, they all can be nominee. Now, why is nomination critical? Nomination is a critical activity, which a lot of us miss out because eventually it creates a lot of unwanted hassle for our nearest ones. तो इस unwanted hassle को थोड़ा समझते हैं. For example, if somebody passes away, then all their deposits, all their accounts of that original owner, they cannot be claimed. That money cannot be claimed by their near and dear ones if the nomination details are missing, right? uh, उनको जो उस पैसे को मिलने के लिए बहुत लंबा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, विच वुड नॉट बी आइडियल फॉर मी टू टॉक अबाउट हियर। बट उस लंबे प्रोसीजर और उस हैसल से बचने के लिए अगर आप सिर्फ वहाँ पे एक financial investment लेते टाइम या फिर even later at a later date, just update that nominee. It's a very simple activity. It will hardly take you like 2 minutes to do it. So just contact your bank, just contact your financial planner, or contact your demat account service to check who the nominee is.
और जो एक्सेल शीट हमने बनाई थी ना जिसमें पासवर्ड्स लिखे थे, उसी एक्सेल शीट में आप लिख भी सकते हैं कि इसको मैंने इतना नॉमिनी बनाया हुआ है। बिकॉज नॉमिनी में क्या होता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ऑप्शन होती है कि कुछ परसेंटेज नॉमिनी आप एक जने को रख सकते हैं, कुछ परसेंटेज आप दूसरे जने को रख सकते हैं। सो यू कैन मेंशन इट इन योर एक्सेल शीट। And can I tell you something? There are thousands of crores of unclaimed deposits lying in banks across the country. There's a startling data from RBI. So don't let this situation happen with your family. And guys, just take 2 minutes to note down all the nominations in your financial products today itself. The third thing that I have seen happen over the past 1 year and which has really disturbed me is that एक सिंपल से कागज पे अपनी विल लिख डालो यार। कितना कितना मुश्किल है विल लिखना। सबको लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा, लॉयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रजिस्टर करानी पड़ेगी। वो सब कंपल्सरी नहीं है बॉस, कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। सिर्फ आप एक नॉर्मल कागज पे अपना सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप होल्ड करते हैं, right, all the assets, all the liabilities, everything, just write it down on a simple plain piece of paper. It doesn't have to be any special piece of paper also. Just sign it with your date and your wish कि आप किसको ये देना चाहते हैं। Just in case you are no longer around, how do you want your wealth to be distributed? एक ये इतनी सिंपल सी एक्टिविटी अगर आप एक संडे आफ्टरनून बैठ के भी कर लेंगे, it will save so much hassle that your family might have to create a simple will this Sunday afternoon and get done with it. लॉयर को इन्वॉल्व करना है, रजिस्टर करानी है, these are good options to have. Of course प्रोफेशनली होगी, रजिस्टर्ड होगी, तो it will be much better. बट अगर वो सब नहीं भी करने का टाइम, देन एक प्लेन पेपर पे लिख के साइन करके अपने लॉकर में डाल दो और बता दो सबको कि मैंने यहाँ पे अपनी विल छोड़ दी है, right? So just do that as soon as possible. The other thing is having adequate insurance. मैं हर जगह सारे सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती हूँ, टर्म प्लान ले लो प्लीज, टर्म प्लान ले लो, कहीं से भी ले लो, बस just purchase that life insurance. You know what happens, like a lot of times people think कि यार हमारे पास बहुत धन दौलत है, हमारे पास investments हैं, we don't need that life insurance. But what about liquidity? You know, when somebody goes away and you can't just start selling your assets, your family cannot just start selling your investments, right? What if the market has crashed? Selling those investments would like incur a lot of huge loss to them. So life insurance will make sure that, you know, this that little phase of life is bridged. उस टाइम के लिए उनके पास पैसा है, लिक्विडिटी है, which will help them overcome that period of time, right? और सोचो, if you have kids, if you have a dependent parent or a dependent spouse, then it's a must. Please don't think that life insurance पैसा जा रहा है खाली, हमें क्या मिल रहा है? No, it's your duty. It's your duty to make sure that when you're gone, the people who are financially dependent on you do not face that problem. So provide for them because you owe it to them. और एक बहुत important चीज जो मैंने देखी वो है operation of accounts. When you open a bank account or even a demat account, there are two ways. One is a joint account and the other is either a survivor. सो जॉइंट अकाउंट का मतलब है कि दोनों के दस्तखत चाहिए, मतलब दोनों को साइन करेंगे, दोनों लोग साइन करेंगे तभी कुछ उसमें हम एक्टिविटी कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना, रिडीम करना, या फिर बैंक है तो फिर पैसे डालना निकालना। सो जॉइंट अकाउंट की जगह अगर हम आइदर और सर्वाइवर करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आइदर और सर्वाइवर का मतलब है कि इवन इफ वन पर्सन इज नॉट देयर, the other person can operate, right? So that is a very very helpful thing that we can note. So if you have or if you intend to hold an account with maybe your parents or your spouse or your kids, then go for either or survivor so that either of you can operate it. Another thing which I would like to mention is minimize your debt. Now debt means आपके बोर्ड, आपके सेट के ऊपर कितना
लोन का बोझ है। और अगर आपके सिर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है तो वो बोझ आपकी फैमिली को कैरी करना पड़ेगा, एंड इफ इट्स अ बिजनेस, इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, देन इवन योर पर्सनल एसेट्स कैन गेट अटैच्ड, and in a lot of other cases your personal assets can get attached if there are creditors, or if there is a loan on your head, and if you pass away. So why do you want your family to go through this? And not just this, like, I came across some cases where such high debt had been taken by the people, by the owners of companies, and even personal loans. Makes me think that, why can't we go back to the old lifestyle where जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो वाला जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में, हम वापस उस कॉन्सेप्ट में क्यों नहीं जा रहे? हम लोग क्यों अपने एक्सपेंसेस को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें इतना ज्यादा डेट लेना पड़े? कोई अगर बिजनेस की मजबूरी है तो वो अलग बात है, बट जितना डेट आपकी बुक्स में कम होएगा उतने ही ज्यादा आप रिलैक्स्ड रहेंगे, और उतना ही ज्यादा आपके परिवार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा. Minimize your debt as much as possible. And the seventh and the last thing that I would want you all to think of is to invest in financial education. Talk about money with your family. Talk about what your wealth strategy is with your spouse or your special someone, maybe your parents or your kids, right? They all need to know कि आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपने किस माइंडसेट से की हैं. अगर आपने इक्विटी में पैसा डाला है तो आपने कितना लार्ज कैप में डाला है, कितना स्मॉल कैप में डाला है, और क्यों. So, unless you talk about money with your family, unless you invest your time in educating them financially, then carrying forward your legacy or carrying forward your wealth strategy will be, uh, you know, burdensome for them. So, if you want a smooth transition, and if you really want that wealth to grow in the way that you had, admired or cherished or dreamt of, go ahead and take them in your confidence. Talk to your spouse about your wealth strategy. I know India में पैसे के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, especially in the family, because they all feel like, ये तो कर लिया हमने, बैंकर से बात कर ली, फाइनेंशियल प्लानर से बात कर ली, हो गया, सीए जानता है हमारा. लेकिन स्पाउस को बताना, अपनी वाइफ को बताना, अपने हस्बैंड से डिस्कस करना, अपने बच्चों को बता के रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टूडेज टाइम. And you will be doing a greater thing. You will be planting the seeds of financial education in them, right? Invest your time in financial education in your family. आपको जितनी भी knowledge है वो share करिए, और as a whole family, if you feel that you can, further that knowledge, then right now is the right time. Go ahead, attend webinars, attend courses, take up courses online, and don't hold yourself back, because this is something that will remain with them forever. बाकी एजुकेशन वो कर लेंगे, बट अगर फाइनेंशियली सिक्योर आप उनको बना के जाएंगे, अगर आपने उनको फाइनेंशियल एजुकेशन दे दी अपने बच्चों को, then they will always be thankful to you. Right? On that note, I'll sign off, and I'll just quickly recap 7 points. पासवर्ड्स अपने शेयर करके रखिए, नॉमिनेशंस सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डालिए, अपनी विल फटाफट बना लीजिए, अपने इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान ले लीजिए, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स आइदर और सर्वाइवल मोड में, अपने डेट को, अपने ऊपर जो लोन्स हैं उनको कम से कम रखिए, और घर में फाइनेंस की बातचीत करिए, अपनी वेल्थ स्ट्रेटजी की बातचीत करिए, and invest in financial education. See you and have a safe